Assalamu alaikum everyone. I'm your English teacher Bakhtavar Mawal. आज वरी हिकु नए टॉपिक सां गॾु तव्हां सां गॾु आहियां। कल्ह असां फ्यूचर टेंस स्टार्ट कयो हुयो, उन सां गॾु गॾु मां तव्हांखे पास्ट परफेक्ट ऐं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जा कुझु एक्सरसाइज़िस करायूं हुयूं, त तव्हांखे उहो क्लियर थी चुको हुयो। कल्ह असां फ्यूचर जो एक्सरसाइज़िस भी कंप्लीट करे छॾियूं हुयूं, प्रैक्टिस भी करे छॾी हुई। उन सां गॾु गॾु असां यूज़ेस भी सिखिया हुया, त जेको फ्यूचर सिंपल आहे उहो कीअं ऐं कहिड़े सेंसेस में यूज़ थींदो आहे, स्ट्रक्चर भी असां कल्ह सिखियो हुयो। त अगरि कंहिंखां मिस थी वियो आहे त उहो कल्ह वारो लेक्चर ॾिसी सघे थो, ठीकु आहे। Now let's move on to the topic that we are going to finish today. फ्यूचर टेंस जेको आहे उहो असां कल्ह स्टार्ट कयो हुयो, उन जो सिंपल जेको आहे फर्स्ट कैटेगरी उहा असां कल्ह सिखी हुई। अॼु मां ट्राई कंदमि त जेके 3 कैटेगरीज़ आहिनि उन्हनि खे तव्हांखे सम्झायां ऐं उन्हनि जी जेका प्रैक्टिस आहे, उन्हनि जी जेको स्ट्रक्चर आहे उहो तव्हांखे सम्झायां ऐं कहिड़नि कहिड़नि सेंसेस में असां इहे यूज़ करे सघूं था। जॾहिं असां डिफरेंट टाइम जी ॻाल्हि कयूं था, जॾहिं असां वर्ब जी ॻाल्हि कयूं था, ठीकु आहे। सो लेट्स मूव ऑन। फ्यूचर टेंस अगेन we are going to finish it today, and then I'll tell you what we are going to do tomorrow, right? Okay, so move on. So kala sa simple padhiyo hoyo, theek hai. What we are going to do today we are going to focus on future continuous tense, theek hai. Future continuous tense jeko ahe uho jesa padhandasi, un kha ilawa okay, so गड गड मां तव्हांजा कमेंट्स भी पढ़ंदी हलां, ठीकु आहे। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस असां अॼु पढ़ंदासीं। हाणे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जेको आहे उहो छा आहे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन व्हिच विल अकर एट सम टाइम इन फ्यूचर। हाणे ही ॿुधाए थो त फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जेको आहे उहो असांखे अहिड़ो एक्शन ॿुधाईंदो, अहिड़ो कमु ॿुधाईंदो जेको ऑनगोइंग हूंदो, हलंदड़ हूंदो, प्रोग्रेस में हूंदो, कंटिन्यू हूंदो फ्यूचर में, ठीकु आहे। एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, एट सम टाइम इन फ्यूचर, एग्जैक्ट पॉइंट हूंदो फ्यूचर में जंहिंते कमु हलंदो हूंदो, प्रोग्रेस में हूंदो, उहो हूंदो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुलु सिंपल आहे इहो। ओके, पहिरीं चए थी मैम अॼु कॉम्प्रीहेंशन कराइण वारा हुया। बिल्कुलु अॼु कराइण वारी हुयमि, तव्हांखे ॾाढो यादि आहे। ॾिसो सभिनी खे एक्चुअली लास्ट में मां तव्हांखे कॉम्प्रीहेंशन जो थोरो ॿुधाए छॾंदमि, पर कॉम्प्रीहेंशन जेको आहे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिटेल्ड टॉपिक, ठीकु आहे। सो मां इहो सोचियो वरी जॾहिं कॉम्प्रीहेंशन खे थोरो पढ़ियमि ऐं थोरो उनखे ॾिसण जी कोशिशि कयमि, त मूं इहो सोचियो त टेंसिस छो न अॼु कंप्लीट करायूं, इन टॉपिक खे फिनिश करायूं। लास्ट में तव्हांखे थोरो मां हिकु रिव्यू ॾेई छॾींदमि कॉम्प्रीहेंशन जो, ऐं सुभाणे जी जेका क्लास हूंदी न उन में सर शफ़ीक हूंदा, उहे तव्हांखे कॉम्प्रीहेंशन शुरू कराईंदा ऐं उन सां रिलेटेड जेके बि शयूं हूंदियूं मां तव्हांखे उहे ॿुधाए छॾियां थी, त जीअं तव्हां उन्हनि जे बारे में थोरो पहिरियां ई पढ़ी वठो। ऐं सुभाणे जी क्लास जेका हूंदी दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बिकॉज द टेस्ट इज ऑन द कॉम्प्रीहेंशन एंड रिलेटेड like questions from the comprehension and how we are going to take answers from the comprehension. So antonyms, synonyms and preposition and all these things that will be included in tomorrow, right? Tomorrow's class. So अॼु ही complete कयूं था। इलाही ड्राई टॉपिक आहे, मूंखे ख़बर आहे त टेंसिस पढ़ण में ॾाढो थींदो आहे असांखे, पर अॼु ही जल्दी सां फिनिश कंदासीं, सुभाणे खां कॉम्प्रीहेंशन शुरू करे छॾंदासीं। अॼु मां तव्हांखे लास्ट में ओवरव्यू हुन जो ॾेई छॾींदमि, ठीकु आहे। ओके, सो गुड इवनिंग। मुराद चए थो गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। सो लेट्स मूव ऑन। हाणे ही छा थो चए, ऑनगोइंग हूंदो, को कम हूंदो, कंटिन्यूड वर्क हूंदो, एक्शन हूंदो जेको फ्यूचर में सम टाइम एट सम टाइम एक पॉइंट हूंदो उन में थींदो, ठीकु आहे, थी रहियो थींदो। So it says it expresses future action having an ongoing nature, ठीक है, ongoing nature है। continuous बुधाई असांखे तो यो ongoing है, यो process में हूंदो कम, ठीक है। that is expected to start in future and continue for a period of time in future। हाणे कंटिन्यू थोड़ो फ्यूचर में माना हिकिड़ो कम आहे न जेको शुरू थियो आहे, कंटिन्यूटी जेका हूंदी, प्रोग्रेशन जेका हूंदी कम जी, उहा जेका हूंदी उहा ॿुधाईंदी त थोड़े टाइम ताईं उहो कम हलंदो, ठीक है। प्रोग्रेस में आहे, इट मीन्स के हिकड़े पॉइंट ते शुरू थियो ऐं थोड़ी देर जे लाइ, थोड़ी पॉइंट जे लाइ, टाइम जे लाइ उहो कम हलंदो रहियो, तॾहिं त उहो प्रोग्रेशन ॿुधाईंदो असांखे, तॾहिं त ॿुधाईंदो त ही कंटिन्यूअस आहे। त फ्यूचर में को कम शुरू थींदो, थोड़े टाइम लाइ हलंदो, अ पॉइंट ऑफ
टाइम इन फ्यूचर वो हुंदो फ्यूचर कंटिन्यूअस। हाणे स्ट्रक्चर ता ॾिसो माना ऑनगोइंग आहे, एक टाइम ते शुरू थियो हले तो पियो प्रोसेस में आहे, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके। हाणे सिग्नल वर्ड्स केड़ा आहिनि? सिग्नल वर्ड्स इलाही इंपॉर्टेंट आहिनि। जॾहिं असां सिग्नल वर्ड्स खे ॾिसंदा आहियूं न त असांखे आइडियो थी वेंदो आहे त ही कहिड़ो टेंस आहे ऐं हिन में कहिड़े टाइम जी ॻाल्हि थी रही आहे। जॾहिं टुमोरो मॉर्निंग आहे, इन 1 year आहे, नेक्स्ट मंडे आहे, सो दीज आर द सिग्नल वर्ड्स ऑफ फ्यूचर। असांखे ॿुधाईंदा त टुमोरो मॉर्निंग, इट मीन्स द वर्क हैजंट डन येट। ठीक आहे, द वर्क was not like we are not talking about past, we are not talking about present. Tomorrow morning, something that is going to take place in future, right? In 1 year, something that will be done in the future will be tika next Monday. Next Monday, it means we're talking about the Monday that will come, right? We are not talking about the Monday that has passed, that has gone, right? No, the Monday that will come. हाणे मां अॻियां ॿुधायां थी, सिग्नल वर्ड्स तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त तव्हांखे आराम सां आइडेंटिफिकेशन थी वेंदी त फ्यूचर आहे, प्रेजेंट आहे, पास्ट आहे। ठीक आहे, ओके। सो sometimes so kindly explain you ma'am, इहो मां तव्हांखे समटाइम ॿुधाईंदमि, मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदमि त पॉइंट जेको आहे न हिकु जेको फ्यूचर आहे उहो तव्हांखे सर्टन पॉइंट्स ॿुधाईंदो त उन्हनि पॉइंट्स खे, उन्हनि सिग्नल्स खे जॾहिं असां ॾिसंदासीं त असांखे ख़बर पइजी वेंदी त इहो कहिड़ो टेंस आहे। ठीकु आहे, इहो कहिड़े टेंस जी ॻाल्हि थो करे। इन शइ खे मां अॻियां हली करे फर्दर तव्हांखे डिफाइन कयां थी त इहो तव्हांखे क्लियर थी वेंदो। ठीकु आहे, उन खां अलावा सोबिया इहो क्वेश्चन कयो हुयो, मां इहो ॿुधाए छॾ। अच्छा मैम, सुभाणे त टेस्ट आहे न, पोइ क्लास थींदी? सुभाणे क्लास बिल्कुलु थींदी ऐं शाम जो तव्हांजो वरी टेस्ट हलंदो। ठीकु आहे, टेस्ट जो जेको आहे उहो संडे ते हाणे कोन्हे, हाणे टेस्ट जेको अथव उहो सैटरडे ते करे छॾियो आहे असां, त जीअं हिकु ॾींहुं तव्हांखे बि रिलैक्स मिली वञे ऐं असां बि थोरो हुन में तव्हांजे लाइ कुझु नयूं नयूं एक्टिविटीज़ प्लान करे सघूं। ठीकु आहे, सो सुभाणे टेस्ट बि आहे ऐं क्लास बि आहे। ठीकु आहे, ओके। सिंधी सेंटेंस में लास्ट में हाँ ठीक है, उस्मान चए तो दो दादी थींदो। हाँ, इहो त हाणे तव्हां मूंखे बिल्कुलु ॿारनि वारो त ॿुधायो। जॾहिं ग्रामर ट्रांसलेशन असां पढ़ंदा आहियूं न त पोइ असां इहे ट्रांसलेशन्स करणु शुरू कंदा आहियूं। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज इक्वल टू ओके। सिकंदर चए तो प्रोग्रेसिव भी चयो वेंदो आहे। बिल्कुलु मां तव्हांखे ॿुधायो जॾहिं पास्ट प्रोग्रेसिव तव्हांखे पढ़ायां पई त उहो फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आहे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी आहे, पास्ट कंटिन्यूअस आहे, पास्ट प्रोग्रेसिव आहे। हिक ही शइ जा ॿ नाला आहिनि। ठीकु आहे, ओके। सो डन विद द सिग्नल वर्ड्स, लेट्स मूव टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। हाणे सेंटेंस स्ट्रक्चर जेको आहे पॉजिटिव सेंटेंसेस जो, उहो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कीअं ठहंदो? हाणे हिते तव्हां ॾिसो सब्जेक्ट प्लस विल बी। हाणे जेको सिंपल हो उन में असां सिंपल फ्यूचर जी ॻाल्हि पिया कयूं, जॾहिं इनडेफिनिट फ्यूचर जी ॻाल्हि पिया कयूं त उते सिर्फ़ु असां विल हयूं। ठीकु आहे, पर हिते असां विल बी जी कंदासीं। विल बी, हाणे विल बी उन सां गॾु प्रेजेंट पार्टिसिपल हणंदासीं, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ठीकु आहे, प्लस आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म सां इंक्लूड कंदा आहियूं असीं। ठीकु आहे, थर्ड जेको फॉर्म हूंदो वर्ब जो या सेकंड फॉर्म हूंदो उन सां आईएनजी न लॻंदो, उहो माना पाण ई रेगुलर इरेगुलर या जेके भी टेंसेस हूंदा आहिनि उनखे वरी अॻियां तव्हांखे ॿुधाईंदमि। उन जो यूज़ जेको आहे उहो कंदा आहियूं असां परफेक्ट में। परफेक्ट में असां कंदा आहियूं रेगुलर इरेगुलर वर्ब जी इंक्लूजन, उनखे ऐड कंदा आहियूं असां। ठीकु आहे, पर जेको कंटिन्यूअस आहे उन में आईएनजी हणंदा आहियूं। आईएनजी असांखे ॿुधायो आहे त ॿुधाईंदो आहे त समथिंग इज इन द प्रोसेस, गोइंग ऑन, हली रहियो आहे, कंटिन्यू आहे, प्रोग्रेस में आहे। ठीकु आहे, सो इहा ध्यान में रखो ॻाल्हि त विल बी जेको आहे, विल बी जेको आहे उहो असांखे ॿुधाईंदो त ही जेको आहे उहो फ्यूचर प्रोग्रेसिव आहे। ठीकु आहे, फ्यूचर कंटिन्यूअस आहे। सब्जेक्ट हणंदासीं, उन सां गॾु विल बी लॻंदो, इन जो हेल्पिंग वर्ब आहे, ऑक्सिलरी आहे, उन सां गॾु प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी लॻंदो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंक्लूड कंदासीं आईएनजी, दैट विल बी द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वी कॉल इट जर्न एज वेल। ठीकु आहे, उन खां पोइ ऑब्जेक्ट हणी छॾंदासीं, दैट इज द स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ positive sentence when we make future continuous। ठीक है, हाणे हेठ ॾिसो सब्जेक्ट केड़ा केड़ा थी सघन था। I, she, he, it, they, we, these are the subjects that we can add। ठीक है, उन खां पोइ will be इन जो थी वेंदो छा, helping verb थी वेंदो। will be is the helping verb and then present participle, that is the first form plus ing, and then we'll put object at the end। ठीक है, ओके। सो हाणे मां गद गद तव्हांजा पढ़ंदी थी हलां कमेंट्स भी।
ओके सिकंदर जो पढ़ी छॾियो आहे मां उन खां अलावा अख्तर चए थो अपकमिंग संडे इज इट इज सिग्नल वर्ड इट इज सिग्नल ऑफ फ्यूचर ठीक है मां हर वर्ड हिते नथी लिखी सघां तव्हांखे सिर्फ़ आइडियो ॾेई छॾियो अथमि त जीअं तव्हांखे ख़बर पइजी वञे त कहिड़ा कहिड़ा सिग्नल वर्ड्स थी सघनि था ठीक आहे अगरि हिते सफ़ा नंढड़ा ॿार हुजनि जिन खे मां चौथे पंजे में अगरि पढ़ायां हा वई त उन्हनि खे हिकिड़ी पूरी लिस्ट ॾियां त चवां हा हाणे मेमोराइज़ वेई कयो इन खे ठीक आहे तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि अची वञे पर तव्हां थोड़ा एडवांस लर्नर्स आहियो तव्हांखे ख़बर आहे त उते मां हिकु ॿ वर्ड ॾेई थी छॾियां त जीअं तव्हांखे ख़बर पवे तव्हां ॿियनि वर्ड्स खे रिलेट करे वञो पाण ई सेंस त सम्झी थो वञे माण्हू हुन सां ठीक आहे that's not the problem that's not the problem to identify what is the signal word like once we are clear about the signal words then we won't be having any problem any difficulty in identifying the tense ठीक है okay Muzammil said I shall play cricket okay tanta मुझे बुधाए छे इन sentences thank you Muzammil okay अख्तर टेस्ट टाइम ठीक है comprehension difficult लगंदी है मैम वो तव्हांखे कराईंदासीं ग्रामर फिनिश थी वने पो कंटीन्यूअसली तव्हांखे comprehension कराईंदासीं ठीक है पो तव्हां चवंदव हाणे असां comprehension मां थकी पिया आहियूं त उहा जॾहिं दफ़ा शुरू थींदी न उहा ॾाढी उन में पढ़णो बि इलाही पवंदो तव्हांखे डीप हूंदी पढ़णो पवंदो तव्हांखे त उनखे थोरो कराईंदासीं पर थोरो तव्हां सब्र कयो ठीक है okay please you should carry text with will be useful for the test okay we will babar se to text ke kyo carry okay we will I hin test mein taake sa comprehension hi dindasi so don't worry about it tomorrow tomorrow comprehension will be included in your test we are no more going to add grammar and something like that in the test subhane jeko test hundo wo comprehension hundo un ma kuch questions hunda so be ready थोड़ो एक्टिव थी वेजो ठीक है सो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ण में न थोड़ो असांखे थींदो आहे इन करे कल जी जेका क्लास आहे उनमें सर तव्हांखे पहिरियां ॿुधाईंदा कॉम्प्रिहेंशन पढ़बो कीअं सॼो उन सां रिलेटेड जेके ट्रिक्स हूंदियूं उहे तव्हांखे कराईंदा उन खां पोइ असां टेस्ट में उहो इंक्लूड कंदासीं ठीक आहे ओके मैम लगंदो हा आई वी शल बि लगंदो न जी जी बिल्कुल बिल हणंदासीं त असां सब्जेक्ट जे हिसाब सां हणंदासीं न कल मां तव्हांखे तॾहिं इहो एॾो डिटेल में ॿुधायो हुयो त जॾहिं बिल हूंदो किथे बि त सब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वील पुट इट बट व्हेन यू टॉक अबाउट वर्बल इंग्लिश जॾहिं तव्हां स्पोकन इंग्लिश जी ॻाल्हि कयो था त उन वक़्तु अगरि तव्हां बिल ॻाल्हाए था वञो ठीकु आहे दैट्स नॉट द प्रॉब्लम अॼुकल्ह असां जेका इंग्लिश ॻाल्हायूं था न उहा ॾाढी आसान आहे लैंग्वेज जेतिरी इज़ी हूंदी ओतिरो जल्दी जेको आहे न सिखी सघंदासीं उनखे त बेसिकली लैंग्वेज आहे ई ॻाल्हाइण हाणे लैंग्वेज जो जेको लेक्चर आहे न उहो मां तव्हांखे मैथमेटिक्स वांगुरु या साइंस वांगुरु नथी ॾेई सघां त तव्हांखे एॾी सारी भरे करे इंफॉर्मेशन ॾेई छॾियां ठीकु आहे लैंग्वेज हिकिड़ी डिफरेंट शइ आहे उनखे जेसीं ॻाल्हाईंदासीं न जेसीं यूज़ न कंदासीं असांखे ग्रामर जेका आहे न उहा ड्राई सम्झ में न ईंदी ठीकु आहे सो दिस इज द वे टू लर्न लैंग्वेज like quickly के तव्हां उनखे यूज़ कयो ओके सो ॻाल्हियूं त थींदियूं रहंदियूं मां लास्ट में तव्हांखे तव्हांजा कमेंट्स पढ़ां थी वधीक ठीकु आहे हाणे लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल कंटीन्यूअस हाणे चए थो इट विल बी रेनिंग ऑल डे टुमॉरो हाणे ऑल डे टुमॉरो समथिंग दैट विल कम राइट सिग्नल वर्ड आहे फ्यूचर जो इट विल बी रेनिंग हाणे मी थींदो जेको आहे थींदो रहंदो उहो सुभाणे इट विल बी रेनिंग ऑल डे टुमॉरो news पहिरियां ॿुधी छॾी आहे maybe someone knows about the weather that's why they are saying that it will be raining all the day tomorrow okay then she will be learning English or Sindhi she will be learning English or Sindhi still she hasn't started learning it but she will be learning that in future right so this is how we make simple sentences in future continuous I hope that's clear पर तव्हां मूंखे examples comments में ॾींदा रहो त जीअं वधीक comments जीअं असांखे ख़बर पइजी सघे अगरि कंहिंखे कुझु confusion आहे त उन्हनि खे clear थी वञे ठीकु आहे two examples are enough here वधीक इलाही सारा examples भरींदसि त तव्हां थकी पवंदव ऐं आउं पढ़ी ॿिया अॻियां शयूं न करे सघंदासीं so let's move on now negative sentences affirmative तव्हां सम्झी वियो subject then helping verb will be then we have a fourth form of the verb and then we have object that is a simple form of affirmative sentence to make in future continuous now look at this is negative sentence in negative we put not ठीक है not जेको आहे वो असां add कंदा आहियूं त उहो sentence थी वेंदो आहे negative so उन में का परेशानी जी ॻाल्हि कान्हे बिल्कुलु सिंपल आहे not add कंदासीं त negative थी वेंदो ठीकु आहे ऐं जेको असांजो हेल्पिंग वर्ब आहे उनखे असां अॻियां खणी ईंदासीं बिल्कुलु स्टार्ट में त उहो क्वेश्चन थी वेंदो हलियो ठीकु आहे क्वेश्चन मार्क हूंदो त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त इहो क्वेश्चन आहे सो इहे नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जिन खे ॾिसी करे तव्हांखे ख़बर पइजी सघे थी आइडेंटिफाई करे सघो था त अफर्मेटिव सेंटेंस आहे नेगेटिव सेंटेंस आहे या
इंट्रोगेटिव सेंटेंस आहे ठीक आहे सो सब्जेक्ट प्लस विल एंड नॉट हाणे इते स्टूडेंट्स ॾाढी मिस्टेक कंदा आहिनि सब्जेक्ट खां पोइ विल बि हणी छॾंदा ऐं लास्ट में नॉट हणंदा आहिनि हाणे विल जेको आहे न उहो ईंदो सब्जेक्ट खां पोइ after will we will put not and then we'll put be I will be working all day tomorrow ठीक है I will be working all day tomorrow इहो थी वियो जेको आहे पॉजिटिव सेंटेंस ठीक है I will not be working all day tomorrow इहो थी वियो नेगेटिव सेंटेंस हाणे नॉट जेको आहे न उहो ईंदो will ऐं be जे विच में ठीक है will ऐं be जे विच में ईंदो नॉट ठीक है सब्जेक्ट खां पोइ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लॻंदो हाणे हिते मां तव्हांखे ॿुधायो हेल्पिंग वर्ब में ॿ असां शयूं विझी छॾियूं आहिनि will ऐं be पर जेको नॉट आहे उहो हमेशा विच में ईंदो ठीक आहे सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू like remember हाणे एग्जांपल ॾिसो it will not be raining all day tomorrow she will not be learning English or Sindhi whatever the language she is going to learn she will not be learning नेगेटिविटी ॿुधाए थो त कोन सिखंदी मींहुं कोन थींदो कोन पवंदो सुभाणे ठीकु आहे सो नेगेटिविटी अची वई नेगेटिव सेंस थी वियो न हिन जो त कोन थींदो या कोन सिखंदी ठीकु आहे ओके मैम टेस्ट टाइम फकी अच्छा ठीकु आहे फेरी फेरी मैम आई शैल बी ओके तेजोमल चए थो लाइक अदर कंटिन्यूअस टेंसेस इज नॉर्मली यूज विद अ पॉइंट इन टाइम एग्जैक्टली तेजोमल खे हाणे सम्झ में अची वियो आहे त with a certain point in time ठीक है point असांखे ॿुधाईंदो signal word ॿुधाईंदो असांखे tense जे बारे में good okay Muzammil I will be able to teach school on time I will be able to teach school on time I will be able to teach school on time school पढ़ाईंदा आहियो तव्हां को सब्जेक्ट पढ़ाईंदा हो न का शइ पढ़ाईंदा हो स्कूल त न पढ़ाईंदा हो at school थींदो I'll be teaching at school on time that will be the right one preposition मां तव्हांखे इलाही पढ़ायो आहे उनखे थोरो ध्यान में रखोसि ठीकु आहे बाबर चए थो paragraphs synonyms antonyms and preposition of the text are most important we know that is very very important Babar and we have like the coming lectures on these certain like topics पर तव्हांखे ख़बर त हुजे न preposition आहे छा हींअर ई मां अची खणी तव्हांखे preposition एॾियूं सारियूं ॿुधाए छॾियां तव्हांखे ख़बर ई न हुजे त in किथे लॻंदो on किथे लॻंदो add किथे लॻंदो तव्हांखे ख़बर ई न आहे त synonyms हूंदा छा आहिनि antonyms छा हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां चेंज कीअं कंदा आहियूं उन्हनि जी आइडेंटिफिकेशन कीअं थींदी आहे तव्हांखे कुझु ख़बर ई न हूंदी त तव्हां उनखे कीअं कंदव ऐं comprehension जी ॻाल्हि थी अचे त comprehension में छा हूंदो आहे स्पीच हुंदी है ना रिटन स्पीच हुंदी है ना ताके खबर ही ना हुंदी तो पार्ट ऑफ स्पीच छा इन सेंटेंस में केड़ो केड़ो जेको आहे वर्ड आहे उन जो स्ट्रक्चर किया आहे ताके खबर ही कोन हुंदी टेंस जी खबर कोन हुंदी इज एज एम आर हण जी ताके खबर ना हुंदी अगर हैज हैव जी ताके डिफरेंस खबर ना आहे डिड सां गड केड़ो फॉर्म ईंदो खबर ना आहे त ता उन कॉम्प्रिहेंशन के पढ़ी समझी कोन सकंदा basically this is the reason we have started teaching grammar right so basically अगर पहिरियां ख़बर हूंदी तव्हांखे त ही आहे छा त तव्हां उनखे सही तरह सां पुट करे सघंदव न different exercises में so let us first complete this section and then we'll go for that we have a lot of time and we have collected a lot of stuff about comprehension and all these things right okay so we are done with the negative sentences now let's move on to the question हाणे question में छा आहे मां तव्हांखे ॿुधायो जीअं affirmative में not कोन हूंदो simple structure हूंदो आहे negative में असां not जी inclusion करे सघंदा आहियूं question में छा थी वेंदो जेको असांजो helping verb हूंदो आहे उहो पहिरियां अची वेंदो आहे ऐं लास्ट में असां question mark खणंदा आहियूं ठीकु आहे so will subject plus be हाणे हिते subject विच में अची वेंदो will पहिरियां अची वेंदो be subject खां पोइ ईंदो ठीकु आहे इहो structure अथव उन खां पोइ तव्हांजो main verb लॻंदो जेको ing हूंदो and then we'll put object and question mark ठीकु आहे so example will it be raining all day tomorrow हाणे इहो question जो सेंस थो ॾे पुछे थो त छा सुभाणे मींहुं वसंदो सॼो ॾींहुं will she be learning English or Sindhi छा सिंधी या इंग्लिश सिखंदी ठीकु आहे this is how we make affirmative negative and then questions ठीकु आहे हाणे ही contractions ॾिसो look at this contractions छो जो इहे कॉन्ट्रैक्शंस जेके आहिनि ये ॾाढियूं इंपॉर्टेंट आहिनि ऐं फ्यूचर में अगर तव्हां एम्बिग्विटी जेका आहे उनखे अवॉइड करण चाहियो था जेका असांखे हिकिड़ी मुश्किलात थींदी आहे न त असां किथे विल हणूं किथे शल हणूं त उनखे ख़तम करण जे लाइ तव्हां हिनखे शॉर्ट करे छॾंदव कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कंदव त दैट विल बी ग्रेट
and that will not create any kind of problem or ambiguity. ठीक है? So I will जो थींदो I'll, you will जो थींदो you will, he will, she will, it will, he'll, she'll, it'll, ठीक है? ये थी वेंदो हलियो. We will, we'll, they will, they'll. So in that way we make short form to avoid writing a lot of stuff first of all, and to avoid the ambiguity that creates के आए सां गॾु छा वेंदो, वी सां गॾु छा वेंदो. हाणे हिते जेको तव्हां चयो न कल्ह तव्हां असांखे पढ़ायो त आए सां गॾु शल वेंदो, हाणे वरी विल छो खणी आया आहियो. So this is what के मां तव्हांखे ॿुधायां ट्रेडिशनली असां यूज़ कंदा आहियूं. माना जॾहिं असां फॉर्मल लैंग्वेज रिटन लैंग्वेज जी ॻाल्हि कयूं त उते स्पेशली अगरि को अहिड़ो सेंस आहे त उन में तव्हां शल हणो. ठीकु आहे? ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जॾहिं असां शल करे ॻाल्हाईंदा आहियूं न त that is the वॾी हिकिड़ी डेकोरेटेड लैंग्वेज लॻंदी आहे, ॾाढी सुठी लॻंदी आहे, त पोइ हिनखे ख़बर आहे त शल किथे लॻंदो. ठीकु आहे? But if you are not going to use shall, that is okay, that's fine, no problem. ऐं तव्हांखे मां कल्ह ॿुधायो त विल शल जेको आहे, शल माना एतिरी श्योरिटी कोन्हे, कंफर्म कोन्हे कंहिं शइ जे बारे में. विल जेको आहे उहो ॿुधाए थो त सर्टनिटी आहे, कंफर्म आहे कंहिं शइ जे बारे में. जीअं कल्ह हया हिकु सेंटेंस ॿुधायो हुयो त ही विल किल हिम. ठीकु आहे? विल मतिलबु थ्रेट आहे. He will do it. He is certain. He is sure that he is going to kill him. ठीकु आहे? So this is something we use in a way. Okay. Now let's move on. Let's move on. बस हर को पूछे तो टेस्ट कब है, टेस्ट कब है, टेस्ट कब है. जेॾी महिल सां थी न कमेंट त इहो ई थो अचे. त हाणे टेस्ट जेको आहे उहो सैटरडे ते 9 बजे अथव. ठीकु आहे? सैटरडे ते 9 बजे टेस्ट आहे सुभाणे. ओके? संडे ते कोन्हे, हाणे सैटरडे ते आहे. फाइन? ओके. Tomorrow I will be starting my work from 1 p.m. to Rajesh Chaito. Thika, very good. Your sentence is very good. Okay. Nazia, I will be waiting. I will not be waiting. Will I be waiting? Very, very good, Nazia. This is how we learn on the spot. You are making sentences. Great. Okay. Bakhtavar. Muzammil Chaito, Bakhtavar shall be teaching for half an hour. I won't teach you half an hour. I'll take more time today because I started late. Okay, Muzammil. So, Kashif, okay, in modern time, in any word take will. Yeah, that's why I told you traditionally तांगे use का वर्ण मान कभी, ठीक है? But these days we no more use shall. पर अगर ता written language में shall use कयो था, तो that will make it more formal and सुठो लगंदो, ठीक है? But if you are not using, that will not create any problem. Fine? Okay, so हाणे not कीअं थींदो? पहिरियां मां तव्हांखे ॿुधायो त पॉजिटिव में जेके असांखे यूज़ करणा आहिनि सब्जेक्ट सां गॾु उहे असां यूज़ कयासीं. हाणे I will not जॾहिं असां नेगेटिव सेंटेंसेस जी ॻाल्हि कयूं था त I want, you want, he want, she want, it want, and we want, they want. So this is how we want be coming to your place tomorrow. असां सुभाणे तुंहिंजे घर कोन ईंदासीं. We are not going to come, right? We will not be coming to your place tomorrow. You won't be coming to our shop tomorrow. ठीक है? Or on next Monday in a way. ठीक है? ये sentences ठाहींदासीं, construction use कयो. That's the simple one. हाणे functions कहिड़ा आहिनि? Functions कहिड़ा आहिनि? Future continuous जा. त future continuous जेको हूंदो आहे न उहो refer कंदो आहे unfinished action खे. उहो एक्शन जेको फ्यूचर में थींदो पर अञा ख़तम न थियो आहे. ठीकु आहे? अञा शुरू ई कोन थियो आहे. उहो फ्यूचर में थींदो. ठीकु आहे? अनफिनिश्ड आहे, शुरू कोन थियो आहे त ख़तम कीअं थींदो? ठीकु आहे? और इवेंट दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट द टाइम. लेटर देन नाउ. लेटर देन नाउ इट मीन्स हींअर जे बारे में ॻाल्हायूं था पिया उहो अञा शुरू ई कोन थियो आहे. उहो थींदो ऐं उहो प्रोग्रेस में हूंदो. अञा उहो अनफिनिश्ड हूंदो, ख़तम कोन थींदो. ठीकु आहे? So this is the function. The future continuous is used for quite few different purposes. And different purposes जेको आहे सो यूज़ थिए थो. हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थी जल्दी. Okay, so first one, the future continuous can be used to project ourselves into the future. जॾहिं असां पंहिंजे पाण खे पंहिंजे ख़्यालनि में हुजूं या पंहिंजे बारे में कंहिंसां ॻाल्हायूं न त उहो थी वेंदो जॾहिं असां पंहिंजे पाण खे प्रोजेक्ट कयूं. कंहिं सिचुएशन में पंहिंजे पाण खे सोचे करे ऐं उन जे बारे में असां ॻाल्हायूं. ठीकु आहे? आवर सेल्फ असां पाण सां ॻाल्हायूं या कंहिं ॿिए खे पंहिंजे बारे में ॿुधायूं त उन टाइम ते असां फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ कंदा आहियूं. हाणे ॾिसो this time next week I will be watching TV with my family. हाणे ॿुधाए थो जेको ही टाइम आहे अॼु प्रेज़ेंट आहे न. ठीकु आहे? चए थो हाणे जेको नेक्स्ट वीक इहो ई टाइम हूंदो न
इन में आउं पंहिंजी फैमिली सां गॾु टीवी ॾिसी रहियो हूंदसि। प्रेजेंट में ॻाल्हि थिए पई, ॿुधाए थो पियो प्रेजेंट में, ठीकु आहे, पर फ्यूचर जे बारे में थो ॿुधाए ऐं पाण ई प्रोजेक्ट थो करे त आउं इहो कमु करे रहियो हूंदसि, ठीकु आहे। So this is the use, first use, जॾहिं असां पंहिंजे बारे में continuous ॻाल्हि कयूं, प्रोजेक्ट कयूं ourselves in future, उहो थी वेंदो future continuous में। Next ॾिसो, just think, next Monday you will be working in your new job. सोच, माना हाणे ख़ुशी ॾाढी थी थिए कि न्यू न्यू जॉब मिली आहे, मे बी त just think, next Monday you will be working in your new job. Next Monday माना हींअर मंडे आहे, अॼु मंडे आहे, हाणे नेक्स्ट मंडे जी ॻाल्हि था कयूं असीं। The next Monday सोच त तूं जेको आहे सो नई जॉब ते कम करे रहियो हूंदे, ठीकु आहे, कम स्टार्ट कोन थियो आहे, ख़त्म बि कोन थियो आहे, पर असां ॻाल्हायूं था उन कम जे बारे में, उहो कम थियणो आहे ऐं उहो प्रोग्रेस में हूंदो, ठीकु आहे। So that's I guess that's the clear and fine definition, ठीकु आहे। Okay, so हाणे ॾिसो, the future continuous can be used for predicting, guessing about future events. फ्यूचर जे बारे में प्रिडिक्ट कजे या के अहिड़े इवेंट जे बारे में ॻाल्हाइजे, गेस कजे जेको फ्यूचर में थियण वारो आहे, त उहो बि जेको हूंदो आहे न, उहो असां छा में ॻाल्हाईंदा आहियूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में ॻाल्हाईंदा आहियूं। हाणे लेट्स चेक इट। he'll be, हाणे हिते मां कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कई आहे त जीअं तव्हांखे लॻे त कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड यूज़ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस और वी राइट अबाउट इट, ठीकु आहे। so he'll be coming to the meeting I expect. And I expect ॿुधाए थो त मूंखे guessing जी सेंस थी अचे हिन मां, ठीकु आहे। he'll be coming to the meeting. हू मीटिंग ते माना अची रहियो हूंदो, मूंखे लॻे थो, I expect, ठीकु आहे। he'll be coming to the meeting, रस्ते में हूंदो, कमु शुरू थी चुको आहे, अची रहियो हूंदो, I expect, guess करणु आहे, मूंखे लॻे थो, तंहिंजे करे maybe he's not attending the call or maybe he's not entertaining our call, ठीकु आहे। so this is how we guess. I guess you will be feeling thirsty after working in the sun. हाणे तूं माना मूंखे लॻे थो, गेस थो करे केर त तूं कम सन जे माना हिन में उस में एॾो कमु करे 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 तूं हाणे तूं जेको आहे न, तोखे उञ लॻण शुरू थी वई हूंदी, तूं थर्स्टी हूंदे। थर्स्टी चवंदा आहियूं त जॾहिं असांखे उञ लॻंदी आहे, ठीकु आहे। उर्दू में चवंदा आहियूं प्यासा, ठीकु आहे, प्यास लगना शुरू हो जाए, तो दैट इज समथिंग वी कॉल and that is the something that we guess about it. You will be missing the sunshine once you are back to Murree. हाणे हींअर एॾो सी लॻो पियो आहे, असां त हैदराबाद जा माण्हू, सिंध जा माण्हू जेके आहियूं, असां वटि त सिज सॼो ॾींहुं आहे, माना चऊं था त शाम ताईं आहे, सियारे में बि माशाअल्लाह सां असां वटि हर शइ आहे, सी माना एतिरो कोन्हे को। पर जेके माण्हू पंजाब साइड रहनि था या जेके मरी साइड रहनि था, जेके इन नॉर्थ एरियाज़ में रहनि था, उन्हनि जे लाइ त इहा उस जेका हूंदी आहे न, हिकिड़ी नेमत हूंदी आहे वॾी। So maybe somebody is here with us as a guest and we are saying that person कि you will be missing the sunshine once you are back to Murree. माना तू सिंध जी जेका sunshine आहे न, उहा ॾाढी मिस कंदे जॾहिं तू मरी वापस हली वेंदे। So this is the event he will go to Murree, ठीकु आहे। त उन जे बारे में ॿुधाए थो त गेस करे थो त तू मिस कंदे, ठीकु आहे। Okay, let's move on. हाणे उन खां पोइ छा आहे, in the interrogative form the future continuous be used to ask politely for information about the future. हाणे politely अगर कंहिं इंट्रोगेशन आहे, को क्वेश्चन आहे ऐं पोलाइट वे में अगर असां उहो पुछणु चाहियूं था त उहो जेको आहे उहो कंटिन्यूअस में पुछंदासीं असीं। हाणे will Ali be coming with us? हाणे पुछे थो केर त अली छा असां सां गॾु हलंदो? will Ali be coming with us? Will she be going to the party tonight? हाणे पोलाइट वे में केर क्वेश्चन तो करे, उहो भी कंटिन्यूअस में थी वेंदो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। will I be sleeping in this room? हाणे केर पुछे तो, माना will I be, हाणे ख़बर ना आहे के मे बी सब एडियो कजन्स मिलियूं आहिनि पाण में ऐं वरी घटि थी वई आहे जाइ ऐं चवनि थियूं, माना ईअं केर पुछे तो छा आउं हिन कमरे में सुम्हंदसि, माना ईअं पुछे तो, केर इहो नथो चए त हिकदमि सां ऑर्डर वञी ॾे त I will sleep in this room, ठीकु आहे। no, somebody is asking in courtesy, politeness, when you are having that formal relationship with the person whom you are talking, त उन वक्त असां courtesy, politeness सां उन खे question जे तौर ते पुछंदा आहियूं ऐं उन में असां future continuous यूज़ कंदा आहियूं, ठीकु आहे। okay, so comments पढ़ी वठां मां, कुछ तव्हां जा will be particular sometime, ठीकु आहे। after second sentence signal word कोन आहे, signal word न बि हूंदो, ठीकु आहे, signal word न बि हूंदो त बि तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त फ्यूचर जी ॻाल्हि आहे, छो जो तव्हां हेल्पिंग वर्ब ॾिसी सघो था। ज़रूरी कोन्हे त हर सेंटेंस में तव्हांखे सिग्नल वर्ड मिली वञे,
ठीक है? It's not necessary to put single word in every, like each and every sentence. No, you have to identify with the help of helping verb and the structure of sentence. Okay, so Muzammil, Kanis will be playing. Okay, Sajid, please kindly question mark, please, any question. Question में question mark हुंदो आहे. Sajid, I don't understand your question, what you are asking. तामा में जतो I will be going to Karachi. Going to Karachi, that is simple. मां तव्हांखे ॿुधायो कल फ्यूचर सिंपल पढ़ायो हुयो ऐं हुन सां गॾु गॾु गोइंग टू जो यूज़ मां तव्हांखे पढ़ायो हुयो कल. अगरि मिस थी वियो आहे त तव्हां उहो कल जो लेक्चर ॾिसी छॾियो. ठीकु आहे? ओके. Rabnawaz said, monkeys will not be dancing tomorrow. Monkeys, I don't know why you have put monkeys. You can put humans as well. Tika. So, Tika, that's a kind of humor. Monkeys will not be dancing tomorrow. Okay. Kashif will be, okay, Ali will be playing hockey. Fine. Muzammil. Then Abdul Wahid, I will not be playing cricket. Fine. Haya Noor. Okay. Haya. Mommy will be cooking the food. Yeah. You will be coming here tomorrow. I will be reading the book tonight. They will be playing cricket. Very well done. Good. Okay, that's Amal Chaito. I will not be ferry. I shall be doing, okay, LLM next year. Okay, fine. So these are the sentences. Fine. Saeed Akhtar Saeed Ahmed Asagada, Dashar hai. Jameel hai. My mother will be cooking dinner at this time. Okay. Assalamu alaikum ma'am. Kira hai Sayyida Nuria. अच्छा. Shall and will जो समझाए चवंदा आहिनि त will सभिनी सब्जेक्ट सां लॻंदो. will सभिनी सब्जेक्ट सां लॻंदो बाबा. उन में तव्हांखे कंफ्यूजन जी ज़रूरत कान्हे का. पर मां तव्हांखे ॿुधायो अगेन आई एम टेलिंग यू कि जॾहिं कर्टसी हूंदी, जॾहिं पोलाइटनेस हूंदी, जॾहिं असां थोरो फॉर्मल लैंग्वेज में रिटन लैंग्वेज जी ॻाल्हि कयूं था न त उते शल हणो था अगरि आई ऐं will सां गॾु, सॉरी आई ऐं वी सां गॾु, त दैट विल लुक गुड. ठीक है? But if you are not putting, that's okay. That will not create any problem. Fine. So हर उन सां लॻी वेंदो. will सभिनी सां लॻंदो. I सां लॻंदो, we सां बि लॻंदो. ठीक आहे? ट्रेडिशनली इहो रूल हूंदो हो त I ऐं we सां गॾु असां न हणंदा हुआसीं will. पर हाणे जेको आहे न लैंग्वेज इज़ी थी वई आहे. मॉडर्न जीअं जीअं ज़मानो आहे त हर शइ इज़ी थी वई आहे. त हुन में लैंग्वेज बि इज़ी थी वई आहे. एॾा जेके ट्रेडिशनल रूल्स हुया उहे इलाही सारा रूल्स ख़तम बि थी विया आहिनि. ठीक आहे? So that's the answer of your question. We shall be reading. Okay, so let's move on, guys. Now this look at this use of future continuous. The future continuous can be used to refer to continuous events that we expect to happen in the future. Continuous event अगर को थे तो हिक event का पोइ ॿियो event पियो थे. ठीक है? Continuity आहे के event जी त उहो बि असां छा में यूज़ कंदासीं? Future continuous में यूज़ कंदासीं. हाणे हिते example ॾिसो. I'll be seeing Ahmed at the conference next week. ठीक है? वो हेठ वरी चए थो when he is in Lahore he will be staying with friends. ही लाहौर में जॾहिं स्टे कंदो त ही जेको आहे when he is in Lahore he will be staying with friends. जॾहिं लाहौर ईंदो त पंहिंजे फ्रेंड्स सां गॾु स्टे कंदो. कंटिन्यूटी ॿुधाए थो हिते असांखे, रेफर करे थो त को इवेंट कंटिन्यू आहे. I'll be eating with Hina this evening so I can tell her about new project. ॿ कम थी रहिया आहिनि. हिकु त हिना सां जेॾी महिल आउं खाई रही हूंदसि, मे बी हुन डिनर ते हिना खे सॾु कयो आहे. ठीकु आहे? इनवाइट कयो आहे ऐं उते ई वरी हू जेको आहे सो नओं प्रोजेक्ट हिना सां गॾु डिस्कस करणु चाहे थी. त ॿ जेके कम आहिनि कंटिन्यूटी, उन में बि छा यूज़ थींदो? फ्यूचर जे बारे में ॻाल्हि कयूं था त फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ थींदो. ठीकु आहे? Okay, हाणे हिते छा अथव? ॾिसो, when combined with still, the future continuous refers to events that are already happening now and that we expect to continue sometime into the future. ठीक है? हाणे ही चए थो unfortunately the sea level will still be raising in 20 years. माना हींअर असां के ॻाल्हि के जे बारे में ॻाल्हि करे रहिया आहियूं, के फैक्ट जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं, के इवेंट जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं. ठीक है? जे ऑलरेडी the event has already taken place. ठीक है? That's happening now. थी रहियो आहे. अॼु बि sea level वधी रहियो आहे. ठीक है? अॼु बि sea level वधी रहियो आहे. In 20 years still it will be raising. ठीक है? 20 सालन में भी इहो वधंदो ई रहंदो. Now something is happening and that will happen, continue happening, that will be continuing happening in future. त उहो बि थी वेंदो future continuous. In an hour I'll still be ironing my clothes. हाणे still भी use थी सके थो. Still means I'm doing something right now and I'll be doing that in some time. ठीक है? कुछ वक्त में उहो अञा ताईं कंदी रहंदसि, कंटिन्यू हूंदो. So that still सां गॾु बि असां छा कंदासीं? उहो असां future continuous use करे सघूं था.
ठीक है tomorrow he'll still be suffering from his cold ठीक है अॼु बि कोल्ड अथसि सुभाणे बि सफ़र मिंट में त न ज़ुकाम लही वेंदो ठीक है मिंट में त तव्हांखे थधि जेका लॻी आयो मिंट में त न लही वेंदी न अॼु लॻी अथसि थधि still it means tomorrow that work is continue that thing is continue ठीक है so this is how we do it जमील चए थो त ज़ूम जे थ्रू थींदो जी बिल्कुलु टेस्ट जेको थींदो उहो ज़ूम जे थ्रू थींदो ठीकु आहे नाज़िया सुमरो न नाजिया सुमरो I will not be there okay मुज़म्मिल तव्हांजा पढ़ी छॾिया आहिनि कमेंट्स मां this moment okay टेस्ट सॼो इहो पढ़ी छॾिया आहिनि ma'am if write any sentence on page then use of subject is most important in sentence in capital letters yeah that is very important अगर को sentence शुरू कयूं था त उनखे जॾहिं असां स्टार्ट कंदा आहियूं फुल स्टॉप खां पोइ जेको बि सेंटेंस स्टार्ट थींदो आहे या जेको असां पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस लिखूं था उहो हमेशा कैपिटल हुनजो फर्स्ट वर्ड जेको हूंदो आहे उहो कैपिटल हूंदो आहे ठीक आहे ओके सो लेट्स मूव ऑन हाणे असां प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ियोसीं स्ट्रक्चर समझोसीं उहो समझोसीं त उहो यूज़ करे थींदो आहे किथे किथे थींदो आहे ठीकु आहे इहो तव्हांखे क्लियर थी वियो बिल्कुलु हाणे हलूं था असां फ्यूचर परफेक्ट जी तरफ़ ठीकु आहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस अॼु जे लेक्चर में इहे मां सभु कंप्लीट करे छॾंदमि त जीअं सुभाणे कॉम्प्रिहेंशन शुरू थी सघे ठीकु आहे सो लेट्स मूव ऑन हाणे परफेक्ट छा आहे परफेक्ट मीन्स समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड दैट विल बी finished ठीक है कंप्लीट थी वेंदो एड़ो को वर्ब फ्यूचर में उन जे बारे में असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं हाणे ॾिसो हिते द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज क्वाइट एन इजी टेंस टू अंडरस्टैंड एंड यूज हाणे पहिरियां ई तो ॿुधाए छॾियो त जेको फ्यूचर परफेक्ट आहे न उहो ॾाढो इजी टेंस आहे ऐं उनखे सम्झण बि इलाही आसान हूंदो आहे उनखे यूज़ करण बि इलाही आसान हूंदो आहे सो डोंट वरी अबाउट इट डोंट बी लाइक कंफ्यूज्ड कि कीअं यूज़ थींदो छा थींदो कीअं कंदासीं न बिल्कुल भी न बिल्कुल इजी अथव द फ्यूचर परफेक्ट टॉक्स अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर हाणे फ्यूचर में पास्ट जी ॻाल्हि कंदासीं त उहो थी वेंदो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पास्ट में फ्यूचर जी ॻाल्हि माना पास्ट इन फ्यूचर पास्ट जी ॻाल्हि जेका असां फ्यूचर में कंदासीं उन जे बारे में फ्यूचर परफेक्ट ॻाल्हाईंदो पास्ट जी ॻाल्हि फ्यूचर में कंदासीं ठीकु आहे उहा हूंदी फ्यूचर परफेक्ट तंहिंजे करे इहो ॿुधाए थो त इहो पास्ट परफेक्ट त असांखे ॿुधाईंदो जेको कमु थी वियो फ्यूचर माना त जेको थियण वारो आहे सही आहे हाणे फ्यूचर परफेक्ट टेंस represent an action future perfect tense represent an action which will have been occurred at some time in the future if two actions take place in the future the first one is future perfect tense and the second one is simple present tense हाणे चाहे तो त जॾहिं फ्यूचर परफेक्ट टेंस जी ॻाल्हि कयूं था त उहो represent करे थो अहिड़े एक्शन खे जेको which will have occurred at some time in future which will have been occurred in some time of future if two actions take place हाणे ते ॿ एक्शंस जी ॻाल्हि करे तो अगर ॿ एक्शंस हूंदा एड़े सेंटेंस में जंहिंमें असांखे फ्यूचर यूज़ करणो आहे त उन में छा थींदो त फर्स्ट वन विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस and the second part of the sentence will be simple present हाणे इहो कीअं थींदो मां तव्हांखे ॿुधायां थी ॾिसो हाणे हिते The future perfect tense is often used with a time expression. Time expression is very important in future perfect tense. Time expression जेको हूंदो न उहो तव्हांखे ॿुधाईंदो त ही future perfect tense अथव that identifies a point in future. An example ॾिसो Ali will have baked a cake before you arrive. Before you arrive certain point of time. जेको आहे present simple में प्रेजेंट सिंपल आहे इहो ॾिसो कंसीडर कयो जेको मां तव्हांखे ॿुधायो हिते त ॿ एक्शन थींदा साइमल्टेनियसली फर्स्ट एक्शन विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द सेकंड एक्शन विल बी प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी दैट विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस हूंदो अली विल हैव बेक्ड अ केक अली जेको आहे उहो केक बेक करे चुको हूंदो ठीकु आहे बिफोर यू अराइव तुंहिंजे अचण खां पहिरियां हाणे they will have painted the fence जेका हूंदी आहे न हिकिड़ी लाइन चवंदा आहियूं लाइन हूंदी आहे जेका लाइन हूंदी आहे जेके असां चवंदा आहियूं त जेका इमेजिनरी लाइन चई छॾियूं असां हिकिड़ी हुनखे फेंस चवंदा आहियूं they will have painted the fence before I have a chance to speak to them हुननि लकीर जेका हुई न पहिरियां ई हुननि लकीर जेका हुई उहा पाए छॾी हुई खिचे छॾी हुई इन खां पहिरियां जो आउं हुननि सां ॻाल्हायां They will have painted the fence before I have a chance to speak. माना हुननि हू करे छॾींदा
तेसी मूंखे टाइम मिलंदो उन्हनि सां ॻाल्हाइण जो, they will have painted it. ठीकु आहे. So about future, पर जेको कम थी वेंदो, फिनिश थी वेंदो, परफेक्ट, तॾहिं त परफेक्ट था चऊं असां, फ्यूचर जे बारे में आहे. सेकंड पार्ट जो थी वेंदो सिंपल प्रेजेंट. ठीकु आहे. Okay, so let's move on. हाणे हिते ॾिसो, will have plus past participle. Past participle third form of verb. John will have gone by then. By then, ठीक है. I will have eaten before 9 o'clock. Certain point बुधाए तो हिते before, by then, ठीक है. At this time, the future activity will be completed. इते future activity छा थींदी हुआ complete थी वेंदी. ठीक है. Complete थी वेंदी. So this is how we do it. Okay. हाणे ॾिसो हिते affirmative sentences कीअं ठहंदा. Affirmative ठहंदा subject plus will have. हाणे हिते be न ईंदव. Continuous में असां be हयोसीं, simple में असां सिर्फ will shall हयो, be कोन हयो. ठीक आहे. जॾहिं simple जी ॻाल्हि कई असां त सिर्फ will shall हयोसीं, be कोन हयोसीं. जॾहिं continuous जी ॻाल्हि कईसीं त will be shall be हयोसीं. हाणे वरी जॾहिं perfect जी ॻाल्हि था कयूं त will have हणंदासीं. be न लॻंदो या ठलो will shall न लॻंदो. हिते will have shall have ऐं थींदो. ऐं third form of verb ॿुधाईंदो त past आहे. ठीकु आहे. will have ॿुधाईंदो त ही perfect future perfect आहे. past जेको third form हूंदो उहो ॿुधाईंदो त हाणे ही perfect आहे. ठीकु आहे. For example, I have completed my assignments by 3 o'clock. Completed, will have completed. I will have completed my assignments by 3 o'clock. ठीक है. बुधाए तो त करे छॾंदम, करे छॾींदम फ्यूचर में, थी वेंदो कम इहो. चवंदा आहियूं न त after this event, Ali will have walked over 1,000 miles in those boots. ठीक है. So this is how future, but the work has completed in the future. That will be completed in the future. थी वेंदो. Negative, subject plus will not have, and then third form. will थी वेंदो. इहो बि हिते ॾिसो not लॻंदो त will ऐं have जे विच में लॻंदो. हुते असां will be यूज़ कयो हुयो त will ऐं be जे विच में not लॻो हुयो. हिते will ऐं have यूज़ कयो आहे त हिननि जे विच में लॻंदो not. ठीकु आहे. हाणे by the time you arrive, we will not have finished the meal and the speeches. I will not have read every magazine in the waiting room before I see the dentist. Remember that. And हिते ॾिसो, remember that will not is sometimes written as contraction. हाणे contraction वांगुरु असां यूज़ कंदा आहियूं. ठीकु आहे. त हिते I won't have read every magazine in the waiting room before I see the dentist. Whether you are using contraction or full form, that's up to you. तव्हां ते आहे इहो कीअं था यूज़ कयो हिनखे. ठीकु आहे. Okay. Now question ॾिसो हिते. तेसी मां तव्हांजा कुझु questions पढ़ी वठां. Okay. So हाँ इहो त मां ॿुधाए छॾियो पहिरियां comprehension जो. पहिरीं जेको क्वेश्चन कयो हुयो अख्तर चए थो समटाइम्स सो काइंडली. इहो मां तव्हांखे एक्सप्लेन करे चुकी आहियां अख्तर. सो ॿिया सुभाणे टेस्ट आहे पोइ क्लास थींदी जी मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाए चुकी आहियां. ओके. सो सिकंदर चए थो ऑल्सो कॉल्ड. ठीकु आहे. इहो मां ॿुधाए छॾियो आहे कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन जो तव्हांखे. अहमद अली कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट. हा इहो तव्हांखे ॿुधायमि त पढ़ंदासीं अॻियां त पोइ बोर थी वेंदव हिन मां. ठीकु आहे. तेजोमल चए थो लाइक अदर कंटिन्यूअस टेंस इट विल नॉर्मली. हा इहो बि मां तव्हांखे आंसर करे चुकी आहियां. बाबर तव्हांखे बि इहो ॿुधाए छॾियो अथमि त असां अॻियां पढ़ाईंदासीं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ाईंदासीं. मुज़म्मिल चए थो आई विल बी डूइंग माय वर्क सिंस लास्ट फोकस. इट्स करेक्ट. हा मां तव्हांखे ॿुधायो इहो. ठीकु आहे. सैयदा नूरिया चए थी त शल एंड विल जो इहो बि तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां. ओके. सो दीस क्वेश्चंस आर डन. आई हैव ऑलरेडी एंटरटेन्ड योर क्वेश्चंस. टाइम शोइंग इहो बि ॿुधाए चुकी आहियां. सभु क्वेश्चंस तव्हांजा मां एंटरटेन करे चुकी आहियां जेके मूंखे हींअर लिखिजी मिलिया आहिनि. ठीकु आहे. हाणे ॾिसां थी त हिते छा आहे. मैम राजू चए थो मैम मैम वी कैन से मेन वर्ब प्लस ईडी yes or no. Yes. Main verb plus ed, that is third form. Past participle, that is third form. ठीक है. So कन्ना के हितां पकड़ियूं या हितां पकड़ियूं ॻाल्हि बड़ी साॻी आहे. ठीक है. So हिकिड़ी शइ जा ॿ जेके आहिनि थर्ड ईडी त थर्ड फॉर्म ई लॻंदो न. पर इहा ॻाल्हि यादि कजो हिते रेगुलर ऐं इरेग्युलर खे कंफर्म करणो पवंदो. तव्हांखे मां चयो हुयो त जॾहिं परफेक्ट जी ॻाल्हि थींदी आहे त उते असां ॿ फॉर्म्स वर्ब जा यूज़ कंदा आहियूं रेगुलर ऐं इरेग्युलर. रेगुलर जॾहिं वर्ब हूंदो त डी ईडी जी इंक्लूजन थींदी ऐड कंदासीं. अगरि इरेग्युलर वर्ब हूंदो त उहो बिल्कुलु चेंज थी वेंदो. जीअं गो वेंट गॉन. ठीकु आहे.
सो इहो ताके इम्पोर्टेंट आहे रिकॉग्नाइज करण खबर हुअण त वर्ब जो जेको आहे वो रेगुलर वर्ब आहे या इरेगुलर वर्ब आहे उन जे हिसाब सां ता कंदो त इहो सेंस ता जो रेगुलर जे हिसाब सां त सही तो बीहे पर इरेगुलर जे हिसाब सां गलत तो बीहे ठीक है सो यो थी वियो उन खां पोइ राजेश ताके क्वेश्चन मां आंसर करे छॾियो आहे रंजना से तो आई विल हैव कंप्लीटेड ओके क्वेश्चन आई यू तार मोहम्मद ठीक है मुजम्मिल जो भी आहे सईद अहमद भी जवाब ॾिनो आहे यू विल नॉट प्ले फुटबॉल ओके ठीक है so far your questions are answered जेके भी questions आया आहिनि कमेंट्स आहिनि मां आंसर करे छॾिया आहिनि हाणे let's move on to the question here and will subject have and then third form of verb okay this is simply future perfect tense by the time you arrive we will we have finished the meal and the speeches will I have read every magazine in the waiting room before I see the dentist very simple I'm not going to drag it आगे क्या बुधाए चलियो तम सॼो हाणे WH questions भी हूंदा आहिनि ठीक है क्वेश्चन मां तव्हांखे पहिरियों ई ॿुधायो त सिर्फ़ु असां हेल्पिंग वर्ब के अॻियां बिल्कुलु आणे करे क्वेश्चन कोन ठाहींदा आहियूं WH भी क्वेश्चंस ही हूंदा आहिनि ठीक आहे सो वी हैव टू वेज टू मेक क्वेश्चंस हिकु त जॾहिं असां हेल्पिंग वर्ब के जॾहिं स्टार्टिंग में खणी ईंदा आहियूं त उहो बि हूंदो आहे ॿियो वरी हूंदो आहे WH क्वेश्चन जॾहिं why what how when where these are the words that we use as a WH questions ठीक है so आणे question word plus will plus subject then have plus third form of verb where will the guest have gathered by the time we arrive when will I have done enough work to make her happy ठीक है so this is how we make question okay let's move on आणे function ॾिसो कहिड़ा कहिड़ा आहिनि अफ्तर चए तो मैम रेगुलर ऐं इरेगुलर जो डिफरेंस छा आहे बाबा रेगुलर उहो हूंदो अथव जंहिंमें असां DED हणंदा आहियूं ठीक आहे उहे बिल्कुलु सिंपल वर्ब्स हूंदा आहिनि सिर्फ़ु असां उनखे पास्ट में जॾहिं कन्वर्ट कंदा आहियूं प्रेज़ेंट मां त असां DED हणंदा आहियूं ऐं मां तव्हांखे पढ़ाए चुकी आहियां पहिरियां ई वर्ब्स में त अगरि तव्हां खां मिस थी वियो आहे त तव्हां वर्ब्स वारो जेको लेक्चर आहे उहो ॿुधी छॾिजो ऐं जेके इरेगुलर हूंदा आहिनि उहे बिल्कुलु फॉर्म चेंज करे छॾींदा आहिनि ठीक आहे सो गो वेंट गॉन इहे जेके वर्ब्स हूंदा न बिल्कुलु चेंज थी वेंदा हाणे गो गोड त न थी वेंदो न इहो डिफरेंट इन जो रूल आहे चेंज करण जो सो रेगुलर इरेगुलर इहे हूंदा आहिनि ठीक आहे you will not have spoken English at 3 o'clock Mohammed Hassan so you will be speaking English after learning English so don't worry about it 5 ठीक है okay so हाणे ॾिसो the future perfect tense refers to a completed action in the future असां सम्झी चलियोसीं इहो when we use this tense we are projecting ourselves forward I'm projecting again into the future and looking back at an action that will be completed some time later than now it is most often used with a time expression यो सब शयूं मां तव्हांखे अॻियां ॿुधाए आई आहियां ठीकु आहे त इहो सेम फंक्शन आहे जेको हिते रिपीट कयो आहे मूं हाणे एग्जांपल्स ॾिसो I will have been here for 6 months on June 23rd ठीक आहे हाणे been जेको आहे एज अ थर्ड फॉर्म यूज थियो अथव हिते मथां चओ त हाणे been छो अची वियो हिते इहो वरी असां हिते छो आहियूंसीं न थर्ड फॉर्म जे तौर ते यूज थियो अथव हिते will have त हेल्पिंग वर्ब आहे थर्ड फॉर्म जेको आहे उहो इहो मेन वर्ब आहे by the time you read this I will have left you will have finished your report by this time next week won't they have arrived by 5 o'clock will you have eaten when I pick you up ठीक है so these are the functions that are for future perfect tense okay now let's move on to future perfect continuous and you progressive आहे future perfect continuous आहे something that be completed and then it's still in the progress and something will come in the future so word तव्हांखे ॿुधाए थो नालो ई ॿुधाए थो त perfect continuous progressive again ठीक है okay हाणे हिते ॾिसो रुखसाना चाहे थी तो मैम मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ आपका कॉन्टेक्ट नंबर गाइज वी आर ट्राइंग हार्ड टू मेक अ सेपरेट ग्रुप फॉर गर्ल्स but we are not sure about it so अगर इहो थी तो वञे त रुखसाना जरूर तव्हांखे ग्रुप में ऐड कंदासीं and then you can ask whatever you want पर फिलहाल तव्हां ज़ूम ते जेको टेस्ट थिए थो उन में असांखे जॉइन कयो ऐं फेसबुक ते कंटिन्यू कयो ठीकु आहे later on we'll tell you if we are going to do something for girls separately and like then I don't have any issue to share my number as well fine so Muzammil said so okay so these are okay so look at this
what is the recognition of future perfect continuous tense, or we can say future perfect progressive tense? This tense is used to describe an ongoing action that will that will complete in future. ठीक है? So it is used to express the ongoing nature of an action with regards to its continuation towards a point in the future. Ongoing action पर completion भी show कंदो. ठीक है? फ्यूचर जेको कंटिन्यूअस हुयो वो बुधाए पियो त हिक पॉइंट ते एकड़ो कम शुरू थियो वो कंटिन्यू ही हुयो. ठीक है? कंटिन्यू ही हुंदो, फिनिश न थियो, कंप्लीशन न बुधाई उन्हें. पर ही टेंस जेको आहे वो ताके बुधाइंदो को कम शुरू थियो ऐं वो कंप्लीट भी फ्यूचर में थी विंदो. ठीक है? सो कंप्लीशन ऑनगोइंग भी बुधाइंदो, कंप्लीशन भी बुधाइंदो. हाणे द एक्शन इज assumed to be continued for a time specific or unspecific in future. को भी टाइम थी सके तो स्पेसिफिक टाइम भी थी सके तो अनस्पेसिफिक भी थी सके तो. ठीक है? हाणे at a time reference is used in the sentence to show starting time of the action and for how long the action will continue. ठीक है? how long it will be continued बुधाइंदो ताके, कंटिन्यूटी भी बुधाइंदो ऐं कदे खत्म थींदो, केतिरो हलंदो इहो भी बुधाइंदो. so this is the simple to identify it. हाणे ते ॾिसो since ऐं for. since ऐं for असांखे ॿुधाईंदो. ठीक आहे? ॿ वर्ड्स यूज़ थियल हूंदा हिन में जेके सिग्नल वर्ड्स असीं चई सघूं था इन टेंस जा. त since ऐं for शफीक तव्हांखे पहिरियों ई पढ़ाए चुका आहिनि त since कॾहिं यूज़ थींदो, for कॾहिं यूज़ थींदो. ठीक आहे? पर हिते तव्हांखे मां थोरो ॿुधाए थी छॾियां. हाणे since is used if the exact starting time. ठीक आहे? for example since Friday, since 10 a.m., since 10 o'clock. ठीक है? exact starting point बुधाइंदो of the action is known and intended to be shown in the sentence. ठीक है? for is used to express the amount of time. amount केतरी ड्यूरेशन आहे, केतरो अमाउंट आहे, वो for बुधाइंदो. since सिर्फ starting बुधाइंदो, असांखे उन में कंफर्म न हूंदो फ्राइडे विच फ्राइडे. ठीक है? since 10 a.m. केड़ा 10 a.m. ठीक है? स्टार्टिंग सिर्फ बुधाई असांखे, एग्जैक्ट स्टार्टिंग बुधाई. पर for जेको आहे वो असांखे एक्सप्रेस कंदो अमाउंट ऑफ टाइम. for 5 hours, for 9 months. in that way exact असांखे ड्यूरेशन ख़बर पइजी वेंदी, अमाउंट ऑफ टाइम ख़बर पइजी वेंदी for में. ठीक आहे? सो इहो डिफरेंस अथव. जल्दी सां ॿुधायो त रिपीटेशन थी वञे, पर सर तव्हांखे पहिरियों पढ़ाए चुका आहिनि त अगरि मिस थी वियो आहे त तव्हां उहो लेक्चर सर शफीक जो ॾिसी सघो था. ठीक आहे? ओके लेट्स मूव ऑन. हाणे पॉजिटिव सेंटेंसेस कीअं आहिनि? फ्यूचर परफेक्ट को अगर क्वेश्चन में लिखेंगे, आयशा चेती तो कैसे लिखेंगे? आयशा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. मां एक दफा वरी तव्हां करे थी चना. हाणे ॾिसो हिते क्वेश्चंस हूंदा असांजा. सॉरी गाइस पर आयशा खे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में न आई आहे त उहा वरी असांखे रिपीट करणी पवंदी न. ठीक आहे? ओके हाणे क्वेश्चन ॾिसो. लुक एट दिस आयशा. ये देखें आप कि विल, सब्जेक्ट, हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये कंस्ट्रक्शन है परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट की, जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं. बाय द टाइम यू अराइव, विल वी हैव फिनिश्ड द मील एंड द स्पीचेस. ठीक है? ये सेंस हो गई क्वेश्चन की. एंड देन विल आई हैव रीड एवरी मैगजीन इन द वेटिंग रूम बिफोर आई सी द डेंटिस्ट. सो दिस इज हाउ वी मेक क्वेश्चन इन फ्यूचर परफेक्ट. आयशा आई होप योर क्वेश्चन इज क्लियर. और मैंने कहा कि दो वेज होते हैं हमारे क्वेश्चन बनाने के. एक तो जब हम हेल्पिंग वर्ब जो है इसको स्टार्टिंग में ले जाते हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं. ठीक है? वो उसका स्ट्रक्चर होता है. और होता है क्वेश्चन बनाने का तरीका कि जब हम WH वर्ड्स यूज करते हैं. ठीक है? तो WH वर्ड्स जो होते हैं वो भी क्वेश्चन ही बनाते हैं, वो भी एक आस्किंग ही होती है, समथिंग लाइक दैट. सो वेयर विल द गेस्ट हैव गैदर्ड बाय द टाइम वी अराइव. So this is how we make question. ठीक है? I hope that's clear, Aisha. Okay, let's move on. Okay, since for मां तव्हांखे पढ़ाए छॾियो, हाणे अॻियां पॉजिटिव सेंटेंसेस ॾिसो कीअं थींदा. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब. हाणे हिते हेल्पिंग वर्ब जेको हूंदो न उहो हूंदो will have been, shall have been. ठीक आहे? सिंपल फ्यूचर हुयो, will पिया यूज कयूं. फ्यूचर कंटिन्यूअस हुयो, will be, shall be पिया यूज कयूं. फ्यूचर परफेक्ट हुयो त असां छा यूज कयोसीं? असां यूज कयोसीं will have ऐं shall have. ठीक आहे? हाणे जॾहिं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव था यूज कयूं या उन जे बारे में था ॻाल्हायूं त थी वेंदो will have been or shall have been. ठीक आहे? This is the helping verb of future perfect continuous.
then first form of verb plus ing, gerund fourth form लॻंदो आहे, जॾहिं बि continuity जी progression जी ॻाल्हि थिए त ing लॻंदो आहे. then object and time reference is very very important. तॾहिं मां हिते time reference लिखी छॾियो आहे. time reference is very 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 important. okay, so मुजम्मिल ता सेंटेंसेस लिखो था. ओके मैम फ्यूचर परफेक्ट को क्वेश्चन ऑफ आयशा मैंने आपको बता दिया है अभी. ओके देन ज़ूम आईडी ताके पेज ते मिली वेंदी, उन जे लाइ ता फिकर न कयो. व्हेन विल बी आई ज़ूम लिंक ताके ॾेई छॾींदा. लाइक ऑलरेडी मूंखे लगे तो त ॾिनल आहे, पर आई डोंट नो शायद मे बी अॼु ताके इहो ॾेई छॾनि. I'll ask them and you will be updated on the page of SSDP. ठीक है, SSDP जे पेज ते ताके अपडेट करे छॾींदा. then तेजोमल sentences लिखी ॾिना आहिनि. thank you. अख्तर चए थो continue our progress both use छो थियल आहे मैम. हाणे के पुछनि था त progressive छो न अथव यूज़ कयो, continue छो लिखियो अथव रगो. के चवनि था त progressive ऐं continue ॿई छो लिखिया अथव. हाणे छा कयूं भला असां, ॿुधायो असांखे. बाबा हिकिड़ी शइ जा ॿ नाला आहिनि. तव्हांखे मां ॿुधायो कन के हितां पकड़ियो या हितां पकड़ियो, ॻाल्हि मिड़ी साॻी आहे. सो प्रोग्रेसिव लिखो, कंटिन्यू लिखो, को मसलो कोन्हे, हिक शइ जा ॿ नाला आहिनि. ठीकु आहे. ओके, अफ्तर तव्हांखे आंसर मिली वियो हूंदो. हेल्पिंग वर्ड आमना नूर चए थी हेल्पिंग वर्ड को पहले रखने से सवाल जुमला बनता है. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे तो वो सवालिया बन जाएगा. ठीक है जी. इसको बाद में रखेंगे तो वो अफर्मेटिव होगा, इसमें नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा. अगर WH क्वेश्चन होगा तो उसके बाद भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा. ठीक है, सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. ठीक है. सो लुक एट दिस. Now let's move to the examples. I shall have been waiting for him for 1 hour. Time reference is very important. ॿुधाए तो progression भी आहे. I will have been waiting for him for 1 hour. ठीक है. She will have been playing football since 2015. ठीक है. Since ऐं for मां तव्हांखे ॿुधायो कहिड़ो डिफरेंस आहे. हाणे इहो स्ट्रक्चर अथव. ठीक है. Then negative subject helping verb not, I mean not लगी वेंदो, will not have been, shall not have been, then fourth form of verb, object and then time reference. ठीक है. Then we have examples. I shall not have been waiting for him for 1 hour. She will not have been playing football since 2015. So this is how we make sentence negative sentences. Look at the interrogative sentences. Helping verb will or shall, then subject, then helping verb have. This is very important. ठीक है. ताकि मां ॿुधायो आहे त कीअं इहो थींदो आहे. वो fourth form verb लगंदी, object लगंदो ऐं reference time अची वेंदो हलियो. Helping verb will or shall is placed at the beginning of sentence. ठीक आहे. तव्हांजे उन जे लाइ मूं लिखी छॾियो helping verb have been is used after subject in sentence. ठीक आहे. will shall जेको आहे beginning में use थींदो. have been जेको आहे उहो use थींदो after subject. ठीक आहे. Okay, example ॾिसो. Shall I have been waiting for him for an hour? Will she have been playing football since 2015? What will she have been baking since morning? ठीक है. So this is how we make future perfect continuous tense. ठीक है. Okay, so interrogative sentences ॾिसी वठो. Helping verb अची वेंदो, उन खां पोइ असांजो subject आहे not, then helping verb again, then time and object. ठीक है. हाणे हिते ॾिसो हिकिड़ी important शइ अथव. In future perfect tense, interrogative negative sentences are just like interrogative affirmative sentences with only use of not after subject. हाणे चए थो जॾहिं interrogative ऐं negative sentences जेके हूंदा आहिनि न, जॾहिं असां negative sentence ऐं interrogative sentence खे combine कंदा आहियूं, ठीकु आहे, त असांजो ठही वेंदो आहे interrogative negative sentence. जॾहिं असांखे negative ऐं interrogative ॿिन्ही जी सेंस ख़बर हूंदी त असांखे सम्झ में अची वेंदो त जेको आहे ही कहिड़ो सेंटेंस आहे, हिनखे कीअं लिखूं. ठीकु आहे. ओके, एग्जांपल्स ॾिसो. Will you not have been reading for 2 hours? Shall we not have been playing cricket since 1 o'clock? हाणे इहो अथव जॾहिं नेगेटिव ऐं क्वेश्चन खे मिलाईंदासीं त इंट्रोगेटिव नेगेटिव ठही वेंदो. ठीकु आहे. ओके, हाणे नेक्स्ट क्लास जो ओवरव्यू. अॼु मां का बि एक्सरसाइज कोन रखी आहे तव्हांजे लाइ, इन्हे जे करे जो क्लास ॾाढी ॾिघी हुई. इलाही कुछ अॼु कवर करणो हो असांखे. टेंसेस अॼु फिनिश थी विया आहिनि. सुभाणे जे टेस्ट में इनशाला कुछ न कुछ टेंसेस मां बि ॾिनल हूंदो तव्हांखे. सो उहो रिव्यू थी वेंदो हलियो. ठीकु आहे. सो नेक्स्ट क्लास जो रिव्यू अथव. हाणे ही ॾिसो, हाणे मां तव्हांजे कुछ क्वेश्चंस पढ़ा, एंड देन आई विल गिव यू दिस रिव्यू एंड देन आई विल फिनिश क्लास. ठीकु आहे.
Okay, Mohammed, पढ़ी चली सही रहना, ठीक है, Mohammed, Babar said I still preparing test has been since one. Okay, that's right. Fine. And next class जो review था the next class में सुभाणे जेको सर ताके पढ़ाइंदा वो reading comprehension पढ़ाइंदा, ठीक है. Tomorrow, like we have very important class, and if you're going to attend that class, then you'll be able to like appear in the test. Test में जेका सुठी participation तानी थी सघंदी न, उहा सुभाणे जी class attend करण खां पोइ थींदी. तो सर शफीक सुभाणे class वठंदा, उहे तव्हांखे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जे बारे में ॿुधाईंदा, उनखे स्ट्रेटजीस ॿुधाईंदा तव्हांखे त रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खे कीअं पढ़जे, कहिड़े तरीक़े सां असांखे उनखे ॾिसजे, उन जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं स्ट्रेटजीस आहिनि, ठीकु आहे, इंपॉर्टेंस ॿुधाईंदा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जी, उन जे बारे में तव्हांखे इलाही कुझु ॿुधाईंदा. एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तव्हांखे ॿुधाईंदा त उहे कीअं हूंदा आहिनि, उनखे कीअं फाइंड आउट कजे ऐं उनखे कहिड़ो तरीक़ो हूंदो आहे उन्हनि खे रिलेट करण जो कॉम्प्रिहेंशन सां, ठीकु आहे. सो दिस इज समथिंग दैट यू विल बी लर्निंग टुमॉरो. I'm not saying that we will be learning tomorrow because I won't take your class tomorrow. So Shafiq will be here. He will teach you comprehension. Okay, so this is the review. Agar तव्हां सुभाणे जी क्लास इफेक्टिवली अटेंड करणु चाहियो था त पहिरियां ई तव्हां शयूं पढ़ी वठिजो, ठीकु आहे. थोरो रिव्यू ॾेई छॾिजो, ओवरव्यू करे छॾिजो त जे सुभाणे जी क्लास में तव्हांखे का प्रॉब्लम न थिए, बिकॉज़ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीकु आहे. सो अॼु जी क्लास जेका आहे उहा एतिरी हुई. आई होप कि जेको कुझु मूं तव्हांखे पढ़ायो सम्झायो आहे उहो तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो. हिकु लर्निंग प्रोसेस आहे, तव्हां पार्टिसिपेट कयो था, कमेंट्स अचनि था, त उन सां ईअं थो थिए मूंखे लॻे थो त मुंहिंजे साम्हूं केरु वेठो आहे जेको मूंसां ॻाल्हाए थो वेठो, ठीकु आहे. सो लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली व्हाट व्हेन वी कम्युनिकेट, व्हेन वी इंटरैक्ट. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. That was all for English class today. Inshallah, subhane, tomorrow Sir Shafiq will take your class. So it is very important class. So be on time and Allah Hafiz.